कि देश की सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने और संवारने का काम सरकार करेगी, लेकिन लगता यह है कि सरकार हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट करने का काम कर रही है। सभापति जी, अभी हाल में बनारस में मनकर्ण घाट है, वहां पर लगे हुई अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति और तमाम मंदिर बुलडोजर लगा करके ध्वस्त कर दिए गए। काशी नहीं सभापति महोदय को ठीक करिए। सभापति महोदय, काशी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह सभापति महोदय, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने वहां एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था हालात का जायजा लेने के लिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या तरीका है? उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस प्रतिनिधिमंडल को जाने से रोक दिया और सीधा एक अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए सरकार ने उस प्रतिनिधिमंडल को वहां नहीं जाने दिया। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले अहिल्याबाई होलकर, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की स्मृति को प्रणाम करता हूं। वो न सिर्फ लोकमाता अहिल्याबाई को, जो होलकर जी को अपना वंशज मानते हैं, पाल हैं, बघेल हैं, धनकर इत्यादि लोग, लेकिन पूरे देश और दुनिया में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के शासन को लोग याद करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह सभापति महोदय कि लोकमाता अहिल्याबाई ने 1767 से लेकर 1795 तक शासन किया और अपनी राजधानी इंदौर से बदल करके महेश्वर कर दी और उन्होंने कितने मंदिर बनवाए, कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, घाट बनवाए, कुएं बनवाए, तालाब बनवाए, तमाम धर्मशालाओं का निर्माण किया। और सभापति महोदय, अयोध्या, काशी, मथुरा, हरिद्वार, उज्जैन, द्वारका, नासिक और सोमनाथ आदि मंदिरों को उन्होंने पुनः स्थापित किया। सभापति महोदय, मैं उल्लेख करना चाहूंगा, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के शासन की एनी बिसेंट द्वारा अपनी किताब चिल्ड्रन ऑफ दी मदरलैंड इतिहासकार गोविंद सखाराम ने 1933 में लिखी अपनी किताब दी मेन करेंट्स ऑफ मराठा हिस्ट्री, 1849 के बंगाल गजेट तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो किताब। सभापति महोदय, आपने हमें 0 आवर में अपनी बात रखने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए। मैं सदन के माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, आपने हमें 0 आवर बोलने का अवसर दिया, इसका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के एक अत्यंत गंभीर और जनहित से जुड़े विषय की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विषय यह है कि प्रदेश में सड़कों, खेतों और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में घूम रहे छुट्टा पशुओं की समस्या। माननीय सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। आज प्रदेश के अनेक जनपदों में छुट्टा गोवंश किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। केवल कृषि ही नहीं, ये समस्या अब सड़क सुरक्षा से भी जुड़ चुकी है। राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर छुट्टा पशुओं के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें निर्दोष नागरिकों की जान जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यह एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गो संरक्षण एवं गो कल्याण की दिशा में अनेक सराहनीय प्रयास किए गए हैं। प्रदेश में गो आश्रय स्थल स्थापित किए गए हैं तथा इनके संचालन हेतु धनराशि भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर इस समस्या का पूर्ण समाधान अभी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुआ है। जबकि गौवंशों से होने वाले उत्पादन गोबर से कृषि क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण खाद का काम करती है। जैसे रासायनिक खादों की 50% कमी हो जाती है, जबकि वो गोबर सड़कों पे तितर बितर होकर के इधर उधर चला जाता है। मैं कृषि की उपज बढ़ाने के लिए इस गोबर की खाद को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता हूं। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं
कि जो गौपालकों को वेतन मिलता है अधिकारियों के द्वारा उनको समय पर नहीं दिया जाता, इसलिए गौपालक गौ आश्रय छोड़कर चले जाते हैं। कोई सरकार से मैं इस विषय को गंभीरता लेते हुए मांग करूंगा कि वहां पर गौ पालकों के लिए अस्थायी रूप से नियुक्ति करने का कोई व्यवस्था करेंगे। ये केवल एक राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के ग्रामीण समाज और कृषि व्यवस्था से जुड़ा विषय है। मुझे आशा है कि इस विषय को गंभीरता लेते हुए सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। जय हिंद, धन्यवाद। श्रीमान इराना कडाडी जी। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान कर्नाटक की दूसरी राजधानी बेलगावी में स्थित हवाई अड्डे से संबंधित मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसका निर्माण 1942 में रॉयल एयरफोर्स की द्वारा किया गया था। बेलगावी कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा 3 राज्यों की सीमा पर स्थित होने के कारण यहां अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। बेलगावी एक बड़ा रक्षा केंद्र है। यहां मराठा लाइट इन्फेंट्री, आईटीबीपी, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर और एयरफोर्स स्थित है। यहां देश की रक्षा करने वाले हजारों जवान, प्रशिक्षणार्थी और अधिकारी लगातार यात्रा करते हैं। बेलगावी एक एजुकेशनल, मेडिकल और इंडस्ट्रियल हब है। केंद्र सरकार यहां एयरपोर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए 262.64 करोड़ रुपए की लागत से नई एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग और 25.98 करोड़ रुपए से एफ्रान का विस्तार कर रही है। उड़ान 3 योजना के तहत बेलगावी को 5 एयरलाइंस के माध्यम से 13 शहरों से जोड़ने का काम चल रहा था, लेकिन आज स्थिति यह है कि केवल 2 एयरलाइंस बची हुई और कनेक्टिविटी सिर्फ 5 शहरों तक सीमित रह गई है। बेलगावी हवाई अड्डा से वर्ष 2024-25 में 3,40,300 यात्रियों ने सफ़र किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 9% की बढ़ोतरी है। इतनी भारी मांग के बावजूद एयरलाइंस ने उड़ान बंद कर रही है। एयरलाइंस केवल तब तक सेवा देती है जब तक उन्हें सरकार से वायबिलिटी गैप फंडिंग या सब्सिडी मिलती है। जैसे ही सब्सिडी की अवधि खत्म होती है, वे उड़ान बंद कर देती है। उड़ान योजना की सब्सिडी समाप्त होने के बाद भी इन रूट पर यात्रियों की संख्या कम नहीं थी। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद रूट पर लोड फैक्टर 85% से 95% तक था। जब फ्लाइट्स 90% से अधिक क्षमता के साथ चल रही थी और बिना सब्सिडी के भी मुनाफा दे रही थी, तो एयरलाइंस द्वारा सर्विस बंद करना गलत है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय उन एयरलाइंस पर सख्त कार्रवाई करे जो हाई लोड फैक्टर होने के बावजूद केवल सब्सिडी खत्म होने पर रूट्स बंद कर देती है। रक्षा वाले और आम नागरिक के सुविधा के लिए मुंबई, पुणे, चेन्नई, इंदौर और जयपुर से शहरों की उड़ान तत्काल बहाल की जाए और यहां सुनिश्चित किया जाए कि बेलगावी की कनेक्टिविटी बनी रहे। धन्यवाद महोदय। श्रीमान नागेंद्र रॉय जी। Sir, I like to bring to your notice that the corridor from Russia to Africa via China, Myanmar, Bharat, Bhutan, Nepal, Pakistan, Afghanistan, Iran, Iraq, Jordan, Israel is the longest corridor in the world. Out of these tracks, Alipurduar to Siliguri is the main corridor covering the national sanctuary like Jaldapada, Chilapata, Gorumara National Park, Boikuntapur Forest, Mahananda Wildlife Sanctuary used by the elephant from era to era. The hills is situated to the north of this corridor and to the south. The density of the population so is the between this area the main elephant corridor is situated, but developmental activity like the construction of the railway track, national highway have been gradually leading to the discussion
detection of elephant and other animals which is the detrimental to the Wildlife Protection Act 1972. It is the very regrettable to say that 41 elephants have died on the 168 kilometer long way from New Jalpaiguri Junction to Alipurduar Junction since 2004. And furthermore, large number of the elephant including camels have died during the last few years. There is an estimated number of 488 elephants who had been facing serious threat from the increasing growth of human population. India still holds a population of around 27,000 elephants. Is the government of India data in 2017. North Bengal has a total of 3,306 square kilometer forest area, out of which 2,000 square kilometer considered as the elephant habitat. But today, this corridor is the context on the occupied by human being. I therefore request the Union government to construct either flyover of the underground process for human being without any disturbance to elephant and other animals for their free movement. Thank you, sir. Thiru R. Girirajan ji. Thank you, Chairman, giving this opportunity to speak on this. The Tamil Nadu Power Generation and Distribution Corporation operates and manages various power projects in Tamil Nadu with a significant total installed capacity of over 45,000 megawatts. Tangetco is one of the best DISCOM in the country. As the sole distributor of electricity in Tamil Nadu, Tangetco ensures that electricity reaches homes, businesses, and industries efficiently. Sir, Tangetco has consistently urged Central Financing Agencies, Power Finance Corporation, PFC and REC Limited to reduce the interest rates on loans to ease their business and improve their financial position. The government of Tamil Nadu has urged REC and PFC to reduce the interest rate on Tangetco's loans to 8%. Nothing that continuous efforts had already reduced the annual interest cost to around 10.5%. Sir, the high interest rates ranging from 9.5% to 12.65% have forced on Tangetco to pay approximately 7,000 crore in interest annually on loans from central institutions, which are rate reduction could significantly decreases. Sir, the Tangetco has been working on restructuring its debt and improving financial performance, including improving its ranking to secure better terms with a projection to break even within the 3 financial years. The Tamil Nadu government continued to call for a reduction of PFC and REC loan interest rates by at least 1.5% and a new comprehensive debt restructuring scheme. Therefore, sir, I urge the Union government to reduce interest rates on loans from PFC and REC by at least 1.5% to alleviate the financial strains and for the development of Tangetco, Tamil Nadu. Thank you, sir. Dr. Anil Sukhdev Rao Bonde ji. धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी तथा स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी, इन्होंने जो मानवीय और स्वास्थ्य हेतु कदम उठाए हैं उसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। 2021 के पहले रेयर डिसीज के बारे में कोई पॉलिसी नहीं थी। 2021 में नेशनल पॉलिसी फॉर द रेयर डिसीज यह प्रधानमंत्री जी द्वारा स्थापन की गई और उसके माध्यम से पूरे भारत भर में सेंटर ऑफ एक्सलेंस यह निर्माण हो गए और इस रेयर डिसीजेस में लाइजोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर यानी गोचर, पॉम्पे, फेब्री, एमपीएस ऐसे डिसऑर्डर के लिए 50 लाख रुपए
प्रति रुग्ण प्रति बालक ऐसे दिए जाते हैं और उसमें एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ये इस बच्चों की जाती है। लाइफ लॉन्ग लाइफ सेविंग थेरेपी है ये एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। उसके वजह से बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है, उसका मेंटल रिटार्डेशन रुकता है। लेकिन इस पॉलिसी में कुछ सुधार करने के लिए मैं ये 0 ओवर में रख रहा हूँ कि 50 लाख खत्म होने के बाद में ये सेंटर ऑफ एक्सलेंस भी गवर्नमेंट के है, गवर्नमेंट की ट्रीटमेंट रहती है, लेकिन 50 लाख खत्म होने के बाद में उनकी डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ट्रीटमेंट हो गई तो बच्चों को रिलैप्स आता है और उनकी जान जाने की संभावना रहती है। जितने पैसे अलॉट किए गए थे उसमें से बचे हुए, तो इसलिए मेरी विनंती है सरकार से कि ये बच्चों को लाइफ लॉन्ग एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी मिले, इसलिए 50 लाख का कैप जो है वो निकालने की मैं विनंती करता हूँ। उसके अलावा एक पोर्टल भी बनाया है जिसमें CSR फंडिंग या कोर फंडिंग भी है। वो कोर फंडिंग को चालना देके ये बच्चों को जो हजारों में बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन उस पोर्टल पे होना चाहिए और लॉन्ग टर्म अनइंटरप्टेड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ये बच्चों को मिलना चाहिए। और जो फंड सेंटर ऑफ एक्सलेंस को दिया गया है वो सेंटर ऑफ एक्सलेंस को गाइडलाइन और SOP देके टाइमली एंड कंटिन्यूअस यूटिलाइजेशन इस फंड का हो, यानी जो दूर दराज के बच्चे आते हैं वो दूर दराज के बच्चे वो सेंटर ऑफ एक्सलेंस में उनको रहना पड़ता है, उनको एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी मिले और किसी की जान न जाए, उसके लिए मैं आज का 0 ओवर रखा हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्रीमान महाराजा सनबोजा लेसाम्बो। Thank you, sir. Sir, my 0 hour is demand for establishment of assembly units of electronics or electrical garments (PSU) in Manipur. Sir, Manipur is a small landlocked state with an estimated population of about 30 lakh plus only. As of now, the state has no big industrial corporate house. Only small and very few medium enterprises are functioning in the state. The literacy rate as per latest population census is 76.94%. State's annual unemployment rate is 4.7% as of 2022-2023, while the national average is 3.2%. As such, unemployment in the productive age group and educated unemployed category is rampant in the state, but the state has abundance of skillful young generation having degrees or diplomas in electronics, electrical, and computer and the other engineering branches. To meet the job demand of this young educated generation, I urge upon the Union government to sanction assembly units of public sector undertaking PSU in electronics or electrical ready-made garment in the state. If found worthwhile, small electronics or electrical or computer parts could be manufactured to provide employment opportunities and boost the state economy as well as save the youth from drug menace and involved in national building. Thank you, sir. श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। Jaya Amitabh Bachchan. Thank you, sir. Sir, I wish to draw the urgent attention of this House to the crisis of acute shortage of qualified special needs educators in India. For millions of children with disabilities, it is a daily struggle for inclusive education. Today, recently, 50% of children with learning disabilities drop out before completing class 10. There is roughly one registered special educator for every 18 to 20 students with special needs enrolled in schools nationwide. As per the WHO guidelines, the requirement is 5 to 6 trained teachers for every 20 students. India's education system faces a critical challenge. Schools lack trained teachers to spot especially dyslexia early, a common learning disability affecting reading and writing in 10 to 15% of its 250 million school children, , leading to undetected cases and wasted potential.
Untreated dyslexia doesn't reflect low intelligence. Many dyslexic individuals excel in creative fields, entrepreneurship, and innovation, but without early intervention and guidance, these students face frustration, low self-esteem, and higher dropout rates. My request to the government, please prioritize WHO-aligned teacher training and infrastructure to deliver early screening, tailored support, which would unlock human potential, boosting literacy rates and economic productivity. Thank you. Shriman Subhash Chandra Bose Pillai, Billy. Honorable Chairman, sir, thank you, sir. ONGC is carrying out oil and gas exploration activities in Dr. B.R. Ambedkar Konaseema district of Andhra Pradesh. During these operations, a blowout incident was reported at Isumanda village, one of the ONGC wells, resulting in an uncontrolled release of gas and oil and causing concern among nearby residents. ONGC activated its crisis management team and senior technical experts to manage and contain the incident. Similar blowouts or major industrial incidents have occurred previously in Konaseema district. One, Kasalupudi blowout in 1995, a major ONGC blowout, fire raged for 65 days, widely considered the largest in the history. Second, Davarpalli blowout in 1997, another significant ONGC well, blowout in the Kottapeta Mandal, flames climbed up to 100 meters. Third, Thandavapalli blowout in 2005, similar blowout contained within 4 hours. Fourth, Nagaram pipeline blaze in 2014, a Gale gas pipeline explosion in Mamidi-Kudur Mandal killed 23 persons and injured 16 persons. Uppudi blowout in 2020, blowout near Uppudi village capped after 2 days. Other blowouts, mud incidents in 1992 and others including Komarada mud blowout. And 7, hydrogen sulfide leak at Kesanapalli 2025. A gas leak incident affecting workers, a child due to equipment and maintenance issues. In Konaseema and its vicinity, there have been at least 5 to 7 notable blowouts for major pipeline gas leak incidents over last 30 years before 2026 event. The people of Konaseema facing many problems due to these blowouts. The nearby lands at the gas wells will sink and also sea will go behind. The GAIL or ONGC or oil companies are not providing job opportunities to the local educated youth. The cooking gas schemes also not being provided to the residents of Konaseema. I urge the Petroleum Ministry, necessary action may be taken for immediate financial assistance to the enhanced financial assistance to the affected farmers due to Irisumanda incidents, and also keep in mind that these efforts aim to control the blowouts, protect residents, and restore normalcy while assessing and mitigating impacts on local communities and agriculture. Thank you, sir. Shriman Sujit Kumar ji. Sir, I rise to highlight the need for corporate support for research in our country. Sir, Section 135 of the Companies Act mandates that companies that meet certain financial threshold have to spend on CSR. Today, sir, 27,000 companies are contributing over 34,000 crores towards education, healthcare, livelihood, skilling, sports, and rural development. Sir, many honorable MPs in the House will attest to the impactful work of CSR in their respective states or constituencies. Sir, the CSR framework has proven that when we align corporate success with national priorities through clear legislation, then India benefits tremendously. Sir, our Honorable Prime Minister has been inspiring us to work towards and to realize our vision of becoming a developed nation by 2047. But sir, for this to happen, robust investment in research and innovation is not desirable, it is essential. Sir, innovation and research are the foundation of any nation's progress, particularly a nation like ours, which is developing rapidly. And sir, the Parliament passed the Anusandhan National Research Foundation Act in 2023, for which I compliment the government. And year after year,
in the annual budget, the Honorable Finance Minister has been earmarking funds for research, which deserves commendation, sir. But despite all this, sir, India today spends only 0.7% of our annual GDP on research, which is really pathetic compared to other countries. Sir, China spends about 2.56, US 3.5, Israel 5.2% of its GDP is spent on research. And also, sir, private sector research in Western countries, developed countries, is over 70 to 80% of the annual research spent in that nation. But in India, it's less than half of that. Only 36% of the total R&D expenditure in India is from the private sector. So, sir, A, R&D spend in India is low, and B, even on this low R&D spend, the private sector spend is even lower. So, sir, I propose that the government introduce Section 135A called Corporate Research Responsibility in the Companies Act, and to replicate our successful CSR model. And, sir, the framework can be straightforward. Companies meeting the existing CSR threshold, that is net worth over 500 crore, turnover over 1,000 crore, and net profit over 5 crore, would contribute 1% of their average net profit towards designated research activities. Sir, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान भारत के विकास का आधुनिक मूल मंत्र है, जो सैनिकों, अन्नदाताओं को, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के योगदान को सम्मान देता है. Sir, Lal Bahadur Shastri ji gave us the slogan Jai Jawan, Jai Kisan. Narendra Modi ji in 2019 added Jai Anusandhan in this slogan, sir. And ये नारा आत्मनिर्भर भारत और 21वीं सदी के ज्ञान आधारित विकास को दर्शाता है. Sir, hence I request the government to, sir, consider introducing Section 135. Dorji sharing lecture. Honorable Chairman, sir, subject concern over Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY guidelines in hilly regions. The PMGSY has played vital role in expanding all-weather road connectivity across rural Sikkim, improving access to